So good evening everyone, and guys, welcome again to the channel here. So early in the afternoon, guys, I have taken a session about the first impression, or if I talk about some basic highlights about this economics, or if about this budget for the year 26-27. So now, guys, it's a time for us to discuss in detail a little bit about what this budget is all about for us for our upcoming examinations, which we are targeting here. So first of all, please quickly tell me in the chat section, guys, whether my voice is audible to all of you. And sorry for being a little bit late here, because obviously थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, तो we have gone through all the document. ठीक है, we've gone through a budget in detail here. Okay, good evening Upasna. Okay जी, okay. So good evening everybody. Again, चलिए. Okay guys, let's talk about this budget. So this budget started with a very basic, this started with a very important thing that was highlighted by the finance minister, that was Sabka Saath Sabka Vikas. That is the core of this budget, and he said that obviously whatever the initiatives we are taking, whatever the proposals we are making, we are going with the launching, that is हम लोगों को क्या करना है, हमको सबका साथ सबका विकास को इकट्ठे, we have to focus on collective effort and inclusive growth of the country here. ठीक है, अब इस चीज को फॉलो करने के लिए इस बार के बजट में जो तीन चीजें आपको याद रखनी है वो है तीन कर्तव्य. तो तीन कर्तव्य जो है उनको फॉलो किया है, और उन फॉलोज को, उन कर्तव्य के ऊपर ही डिपेंड करके जो है गवर्नमेंट ने इस बार के बजट को जो है प्रेजेंट किया है ऑन दिस थ्री कर्तव्य. सो व्हाट आर दिस थ्री कर्तव्य? द कर्तव्य 1, which is focusing on productivity, that is enhancing competitiveness and robusting financial sector growth here. Then we have our second, which is focusing on resilience, and the third one, that is capacity building of empowering family and region with the source here. इन तीन कर्तव्यों के ऊपर जो है हमारा पूरा का पूरा बजट सेटअप हुआ है. एंड इफ दे वांट टू आस्क क्वेश्चन, दे कैन फ्रेम अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन के ये बताइए तीन की टेकअवेज और तीन कर्तव्य कौन से हैं. पहला क्वेश्चन ये बनेगा. अब आते हैं आगे कि इस कर्तव्य के साथ एक चीज बोलेंगे कि why about this कर्तव्य, why now we want to move to this three कर्तव्य, because they have said that there were lot of economic hits that were there, but still we are a country which is growing. और ये बोला गया कि हमारी जो है एक 7% sustained growth हम लोग लेके चले हैं, where they have highlighted three important things, that is monetary stability, moderate inflation, and the third one that was highlighted was fiscal prudence. So these are the three things that were discussed or highlighted by the finance minister there. Then she have talked about the strategic divergence, that how strategically we are focusing. तो कौन से तीन strategic initiatives है जिस पे फोकस किया गया था, वो कौन से थे जी? Domestic manufacturing, energy security, and public investment. So I would say, guys, if you come here, so in this slide, the three things to be important. First of all, they can simply ask you the sustained growth rate, that was 7%. They can simply ask you the strategy drivers they are, which actually led to this specific thing, that is domestic manufacturing, energy security, and public investment here. So this was the initial introduction which she has given to this year's budget here. Now, then she has talked about the important reforms. She has said about 350 reforms we have rolled out in the previous year, and out of these 350 reforms, if I talk about here, जो तीन चीजों पे फोकस हुआ है, सबसे पहले था स्ट्रक्चरल विन. सो जीएसटी, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लेबर लॉज, दैट इज स्ट्रक्चरली वी हैव फोकस ऑन लॉट ऑफ थिंग्स. देन देयर वाज अ थिंग ऑफ प्रोसेस rationalization of quality control, orders were given, and then is some focus, that is adaptive structural reforms, continuous reforms have been given here. And they have also told about in context of collaborative mechanism कि हमने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है जी, जो कि स्टैटिस्टिक्स स्टेट्स के साथ बनेंगे, ताकि एक ईज ऑफ लिविंग जो हम बना सकते हैं, नॉट ईज ऑफ डूइंग, हाउ वी कैन क्रिएट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग फॉर अ सिटीजन. दैट इज समथिंग शी हैज स्टार्टेड हर बजट स्पीच टुडे. Now guys, coming to the important pillar here, तो तीन कर्तव्य जो मैं आपके साथ दोपहर को भी डिस्कस कर गया था, अब हम उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. दैट इज स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कर्तव्य, दैट इज acceleration and sustaining of economic growth here. Now this कर्तव्य was further divided into this 6 key lines. So there 6 key pillars के ऊपर आपका फर्स्ट कर्तव्य जो है वो डिपेंड करता है, डिसाइड होता है, वो कौन से हैं. There was scaling up of manufacturing, rejuvenation of legacy industries, creation of a champion MSME sector for India. Then we want to deliver a push for our infrastructure, and you can see in that specific thing lot of proposals have been given this year's budget. Then आ जाता है जो long term stability बनानी है और एक city economic regions बनाने हैं. So these were the initial things that were discussed or that we will discuss in the first कर्तव्य here.
Now these are very very important things. Now this is where a question can be formed straightforward कि भाई कौन से 6 pillars हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के कर्तव्य 1 के अंदर. Okay, now let's just discuss them one by one. That is first of scaling up of manufacturing sector here. When we have to scale up our manufacturing sector here, ठीक है. और ये भी अगर मैं बात करूंगा ना तो ये भी कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो स्केल अप है उसी को ही आगे 7 की पिलर्स में फोकस किया गया, जिसके ऊपर किस चीज की बात करेंगे हम लोग. कुछ उन्होंने कस्टम्स की बात की, दैट इज दे हैव सेड दैट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स, ठीक है जी, फॉर सी फूड इनपुट्स व्हिच वी वांट टू रेज टू 3%. कंसेशनल ड्यूटीज विल बी रिड्यूस्ड, 5-year tax exemption has been given here. So these were some taxation reforms that were being introduced. Along with that, they have talked about, ठीक है जी, these frontier initiatives, that what are the important things the government is going to focus on. These were like Biopharma Shakti initiative, which I'm going to discuss in detail with you now, Indian semiconductor mission and your space sector. So in terms of space sector, उन्होंने बोला custom duty exemptions कर दें, कुछ critical components के ऊपर बात करें जहाँ पे rare earth metal has been discussed here. Let's discuss them one by one. As of now, I hope guys you are getting the flow, how this budget has been processed, or how this budget has been delivered by the finance minister. Now let me talk about the first important or the first major announcement of the day, that was on Biopharma Shakti initiative. Now this Biopharma Shakti is basically in aligning with the how we have to enhance or how we want to become a leader in our bio manufacturing sector here. आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि हम लोग 3rd लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैं, ये डिस्कस हुआ था. अब उसको हमें कैसे एक्सेल करना है. दे हैव लॉन्च्ड अ मिशन बाय द नेम ऑफ बायोफार्मा शक्ति. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, टोटल आउटले इज 10,000 crore rupees, which is going to be given in 5 years. So a 5-year mission of 10,000 crore rupees has been started. Then they have said for that purpose we have to strengthen our regulatory system, for which Central Drug Standard Control Organization is going to be strengthened here. Then after that, for research and clinical infrastructure, around 1,000 accredited clinical trial sites are going to be set up. ठीक है जी, जो कि एक नेशन वाइड नेटवर्क बनेगा ऑफ द स्टैंडर्डाइज्ड साइट्स के लिए. फिर हमने इसके साथ देखो, यहां पे देखो फ्लो समझो. मिशन रेगुलेटरी सिस्टम स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, रिसर्च पे फोकस करेंगे, और जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है ऑफ द नाइपर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च, जो हमारा नेटवर्क है, वी आर गोइंग टू सेट अप 3 नेशनल इंस्टीट्यूट्स हियर एंड वी विल अपग्रेड आवर 7 existing facilities here. That was the first thing that was discussed in this budget on the national biopharma mission. I hope the first point is clear to all of you guys. Clear on this thing. Let me now talk about space sector. जब हम बात करते हैं तो रेयर अर्थ मेटल के ऊपर बहुत डिस्कशन हुआ था, जिसको हम क्रिटिकल मिनरल्स की बात करते हैं. So in terms of rare earth, permanent magnet metal, they have talked about. First of all, they said that they are going to focus on these states. मैंने क्या बताया था शाम को भी, अभी भी आपको आपके माँ बाप ने टोक दिया है, टोका. That's the thing to remember. टोका, तमिलनाडु, ओडिशा, केरला and your Andhra Pradesh. So these are the 4 states, 4 targeted mineral rich states where this rare earth corridor are going to be set up here. अब इसके लिए आप करोगे क्या, आप इसके लिए what you are going to do is you are proposing to set up a end-to-end value chain system. An end-to-end value chain promotion system is going to be set up here, where you will start from mining, how to process that mining, research कैसे होगा, manufacture कैसे होगा. This is the thing you will be working on. Now, in the context of the given things which we are going to do here, they have also talked about the existing mission of rare earth magnet, which has been launched in 2025. Okay, so that is how they have talked about the second thing in the Kartavya number 1. Then comes my third important thing in the Kartavya, जो पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टर करने की बात की गई है. अब वहां पे क्या क्या बोले, सबसे पहले जो कंटेनर्स के लिए कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम लॉन्च की गई जाएगी. There is a proposal of setting up a container manufacturing scheme, which will be a 5-year scheme. ठीक है, where an allocation of 10,000 crore rupees has been given here. So biopharma, we have given the allocation. So, इसके बाद container manufacturing scheme launch हुई. इसके बाद क्या आएगा जी, एक scheme has been proposed for advanced construction equipment also, so that domestic manufacturing of this high value आइटम्स लाइक टनल, जो हमारी कंस्ट्रक्शन टनल मशीन्स, उसके लिए हम लोगों ने नई स्कीम लॉन्च कंस्ट्रक्शन के लिए. देन देयर इज अ हाईटेक डिजिटल टूल रूम प्लान्ड, व्हिच इज काइंड ऑफ अ ऑटोमेटेड सर्विस ब्यूरो, व्हिच विल बी एस्टैब्लिश्ड बाय द PSUs.
That is what they are saying here. So that infrastructure can be boosted here. Then they have talked about another important scheme, that is electronic scheme outlay. जो इलेक्ट्रॉनिक स्कीम करंटली है उसका आउटले डबल कर दिया गया है, दैट इज अराउंड 40,000 crore rupees, which is basically focusing on commitment on the electronic segment. Then we have India Semiconductor Mission. So it is being proposed that now we're going to set up the India Semiconductor Mission 2.0, ठीक है जी, which will be focusing on equipping materials and designing the Indian intellectual properties. So for that purpose, this thing is done. Then along with that, the third thing that was proposed was the 3 dedicated chemical parks. So as of now, guys, we have gone through the detailed budget speech of the finance minister. We have gone through the budget document itself. But as of now, we have not get the information that where these 3 dedicated chemical parks are going to be set up. So let's wait for, because the budget session has just started. So let's wait for some days, and maybe in few days they will tell us about the location here. So I hope this slide is clear to you. We're talking about the मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कैसे हम लोग एक्सेल कर रहे हैं, जिसके बारे में डिस्कशन किया गया इस बार के बजट में, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले पार्ट के ऊपर, MSME sector, because that's a core thing. I've told you yesterday also, MSME sector is something which is the core here, micro, small and medium enterprise. But for that purpose also, government has come up with the features here, जहां पे बहुत ज्यादा चीजों को उन्होंने बोला है कि we are going to focus here. Okay, so the first thing they have talked about is SME growth fund. So there's a proposal of setting up a small and medium enterprise growth fund here with an investment of 10,000 crore rupees. ठीक है, ताकि हम लोग एक फ्यूचर MSME चैंपियन सेक्टर्स बना सके. तो ये MSME चैंपियन वाले पॉइंट की बात कर रहा है, ठीक है. Then the trade system has been enhanced here, where it has been said that the credit guarantee trust for micro small credit guarantee schemes, they are going to be linked with, the credit guarantee schemes, they are going to be linked with the TREDS platform. Then guys, our GEM platform. So it is being said that GEM, government e-marketplace, the GEM platform is again going to be integrated with the TREDS platform, so that the procurement, or if I talk about the growth of the industries can done, credit guarantee is going to be provided. So that's why the credit platform has been linked with the credit guarantee scheme. ठीक है, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे एनहांसिंग कर दिया. फिर आपने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया कॉर्पोरेट मित्रास के नाम से. You said we are going to set up a cadre of some professionals which would provide affordable compliance support to tier 2, tier 3 cities. ठीक है, corporate mitra. So these are the 3 major initiatives announced specifically for the MSME sector here, जो की बात करता है. इसके बाद क्या बात की गई, उन्होंने बोला जी हम लोग legacy industrial clusters जो हैं उनको revitalize करेंगे. ठीक है, so it's a kind of a new initiative or a new scheme has been started. Again, the simple thing, we are going to revitalize the 200 legacy industrial clusters here. Then along with that, an infrastructure risk guarantee fund has been introduced. Okay, has been proposed here. Again, for that purpose, the money has not been given specifically, but उन्होंने बोला है a partial credit guarantee will be provided to the lenders so that the development and construction risk can be reduced here. Then comes my next part. It said that this specific fund is going to focus on tier 2 and tier 3 cities. तो उनके ऊपर फोकस किया जाएगा for future economic growth. That's something that was discussed even in the economic survey also, कि आप लोग slowly जो हमारी urbanized cities हैं उनके ऊपर भी फोकस करना स्टार्ट करो. तो यहां से निकल गया tier 2, tier 3 cities के ऊपर. ठीक है, that is this thing here. Then comes my next important part है textile sector here. So for then MSME के बाद next आता है MSME से relate करता है textile sector. So it's a integrated textile. For textile sector, it has been said there is a boom here because obviously you can see India European Union trade deal when it has taken place. तो एक बूम की एक्सपेक्टेशन थी और यही बोला है कि हम एक इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल प्रोग्राम्स भी जो हैं हमने स्टार्टअप करेंगे. तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले तो क्या बोला है, नेशनल फाइबर मिशन और अ नेशनल फाइबर स्कीम हैज गोइंग टू बी सेट अप हियर. ठीक है जी, व्हाट इज दिस स्कीम? इट्स अ स्कीम व्हिच इज फोकसिंग ऑन नेचुरल, मैन मेड एंड न्यू एज प्रोडक्ट्स which is required. तो आपको टेक्सटाइल बेटर करना है, फाइबर बेटर चाहिए, तो उसके लिए नेशनल फाइबर स्कीम लॉन्च कर दी है. फिर जी आपको बोला सस्टेनेबल एंड कॉम्पिटिटिव एपरल्स आपको बनाने हैं, तो उसके लिए नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया टेक्स इको. ठीक है, टेक्स इको इनिशिएटिव हैज बीन इंट्रोड्यूस, जो कि बेसिकली आपको ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस लेवल पे लेके जाएगा. देन कम्स माय नेक्स्ट पार्ट, मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल टेक्सटाइल क्लस्टर्स. तो ऑब्वियसली बात है, इफ यू वांट दैट योर टेक्सटाइल सेक्टर शुड बी एक्सपेंडेड, so you have to modernize them also. तो इसमें क्या कर रहे हो आप, you are providing capital for machinery, tools, upgradation and testing centers here.
Then skilling is going to be provided under textile sector here, where you are going to modernize the skilling ecosystem with a new initiative of SMART 2.0. Then guys, the third one was, or the fine, sorry, not third, the fifth one was is targeted and supporting of the artisans and weavers here, which is the core of the government, which government has highlighted also कि हम लोग बहुत ज्यादा support कर रहे हैं हमारे artisans को भी, तो उसी context में मैंने बोला है we are going to integrate and strengthen the existing programs also so that we could empower our handloom and handicraft sector here. अब इसी के साथ यहां पे एक बात की गई थी महात्मा गांधी स्वराज अभियान की, ठीक है। तो इसके बारे में अभी कुछ डिस्कशन नहीं हुआ है, बस जैसे एक नाम दिया गया था कि जो खादी और हैंडलूम सेक्टर्स हैं दे आर गोइंग टू बी, ठीक है, द खादी एंड हैंडलूम सेक्टर्स दे आर गोइंग टू बी प्रमोटेड हियर, ठीक है। उसको हम लोग प्रमोट करने के लिए इनिशिएटिव का नाम यहां पे बोला गया था, ठीक है। दैट इज समथिंग दैट हैज बीन डिस्कस्ड हियर। देन आफ्टर दैट, बिकॉज सारा का सारा कर्तव्य वन बहुत बड़ा था और उसमें बहुत प्रपोजल्स हुए थे। अगला आ जाता है जी कार्गो स्ट्रक्चर हियर। तो कार्गोज और ट्रांसपोर्ट के लिए हमने क्या डिस्कशन किया था? सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रेट कॉरिडोर, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर बनेगा जो कि डानकुनी से कनेक्ट करेगा। इट विल बी कनेक्टिंग डानकुनी टू सूरत। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग हियर, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। देन इट सेड अ न्यू national waterways would be operationalized, which would specifically be operationalized on National Waterway 5 that is in Odisha. जहां पे यहाँ के जो इंडस्ट्रियल हब्स हैं National Waterway 5 that is going to be set up. So remember the state here is important, Odisha. Here also you can see somehow Dankuni to Surat here. Then it said we are going to support some policies. So policies की बात की गई, कौन सी, ठीक है जी। अभी बात करते हैं उसके बारे में। क्या है जी? सबसे पहले उन्होंने बोला है कोस्टल शिपिंग शेयर, अ स्कीम फॉर कोस्टल शिपिंग और इनलैंड कोस्टल शिपिंग इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड हियर, वेयर दे सेट द प्राइम गोल इज दैट वी हैव टू एनहांस और वी वांट टू इंक्रीज द शेयर ऑफ कोस्टल शिपिंग इन इंडिया, दैट इज फ्रॉम 6% to 12% बाय द ईयर 2047. इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। डबलिंग द शेयर ऑफ वाटर बेस्ड ट्रांसपोर्ट, दैट्स अगेन समथिंग रिलेटेड टू दी, इसीलिए आप वाटर कॉरिडोर बना रहे हो। फिर आपने बोला हम लोग कोरियर सेक्टर को भी बूस्टअप करने वाले हैं, वेयर वी वांट टू प्रपोज द करंट, रिमूव द करंट ₹10 lakh वैल्यू कैप फॉर कंसाइनमेंट्स, दैट इज समथिंग दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड हियर। अलोंग विद दैट आपने बोला हम लोग एक इनलैंड शिप रिपेयर हाउस बनाएंगे। कहां पे बनाएंगे मुझे बताइए फटाफट में, इफ एनीवन हैव यू हैव एन आइडिया, ठीक है जी। दैट इज वाराणसी एंड पटना। So in Banaras and Patna, you're going to set up an inland ship repair hub. So that is something that has been proposed in context of cargo sector. इसके बाद हम बात करेंगे हाई स्पीड रेल और रेलवे कॉरिडोर की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। So the first thing they have talked about is, ठीक है जी, that is they are going to set up a 3-tier, ठीक है, a new engine growth will be set up for tier 3 cities and temple towns. So that's something that has been proposed here. Again for that discussion is going to take place, so अभी बताएंगे उसके बारे में भी। Then it said high-speed rail corridors will be set up for sustainable mobility here. So for that, I would say write down these corridors because they are important here. So what are these corridors? Rail corridors. That is, guys, Mumbai, Pune. Mumbai, Pune rail corridor. We have Pune, Hyderabad. These are all rail freight corridors that has been announced here. Hyderabad to Bengaluru. Okay. Then we have Hyderabad to Chennai corridor here. Chennai, Bengaluru. And then we have the Delhi, Banaras, Delhi, Varanasi, and we have Varanasi, Siliguri. Varanasi and Siliguri. So these are the 7 corridors that have been introduced under the railway system. तो रेल फ्रेट कॉरिडोर के 7 कॉरिडोर उन्होंने बोला हम लोग यहाँ पे सेटअप करेंगे, ठीक है। That's a part of this 7 corridors here. Then obviously
some technological initiative has been set up, for the example AI mission, national quantum mission, जो हमारे current mission चल रहे हैं के ऊपर, that they have talked about here. Then in context of banking sector, if I talk about here, the first and the foremost thing that they have highlighted more here is the incentivization of municipal bonds. It said that there's a proposal of 100 crore rupees has been set up for incentivizing those municipalities who are issuing a single municipal bond issuance of over rupees 1000 crore rupees. For that would be incentivized. अमृत स्कीम के अंदर बोला गया इनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, ठीक है जी. देन हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट्स हायर की हैं, ठीक है जी, फॉर दोज पर्संस हु आर रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया. सो इंडिविजुअल्स नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट limit has been raised from 5% to 10% in a limited company. That's again a some sort of, आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट का भी ध्यान रखा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में आए तो उसका ध्यान रखा. फिर आपने बोला है we are going to modernize the banking sector for future growth, ठीक है जी, where a high level committee will review and align the section for the next economic phase here. Okay, so that is something they have talked about here. Then comes the second pillar here. So first pillar is done, ठीक है, फर्स्ट पिलर इज डन एज ऑफ नाउ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड कर्तव्य पिलर, दैट इज ऑन फुलफिलिंग द पीपल्स एस्पिरेशन. अब यहां पे हम क्या बात करेंगे, यहां पे सबसे पहले प्राइमरीली जो बात हुई थी वो हेल्थ केयर सिस्टम को लेकर हुई थी. हेल्थ केयर सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, दैट हैज बीन टॉक्ड अबाउट हियर. हेल्थ केयर सिस्टम, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इज अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स. सो अराउंड 1 lakh allied health professionals are going to be set up here, which is going to be spanning around 10 disciplines. जहां पे रेडियोमेट्री में बात करूं, रेडियोलॉजी होगा, ऑप्टोमोलॉजी होगा, तो उनके ऊपर they are going to set up the allied health professionals here. Along with that, 1.5 lakh training, multi-skilled caregiver trainings are going to be provided here, and that is going to be given as per the NSQF. National Skill Qualification Framework is going to design some sort of design trainings here, which is going to train the 1.5 lakh multi-skilled caregivers. ठीक है, केयर गिविंग इज अगेन समथिंग दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन द इकोनॉमिक सर्वे. देखो जो चीज इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस हुई कहीं ना कहीं उस पे काम बोला गया इस बार बजट के अंदर. फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, थर्ड थिंग इज 5 रीजनल मेडिकल वैल्यू टूरिज्म आर गोइंग टू बी सेट अप हियर. सो मेडिकल रीजनल, ठीक है, और मेडिकल वैल्यू टूरिज्म हब्स आर गोइंग टू बी सेट अप, व्हिच इज गोइंग टू बी सेट अप ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल. दैट इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड. फिर हमने बोला हम लोग आयुष फैसिलिटीज को भी एक्सटेंड करेंगे, जहां पे हम लोग 3 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयुर्वेदा जो है वो सेटअप करेंगे. प्लस वी आर गोइंग टू अपग्रेड अवर WHO ग्लोबल सेंटर फॉर मेडिसिन. तो जेनेरिक मेडिसिन का ट्रेड सेंटर इंडिया में बना हुआ है. वी आर गोइंग टू अपग्रेड दैट आल्सो. दैट इज व्हाट द हेल्थ केयर सिस्टम दे हैव टॉक्ड अबाउट हियर. देन प्रोसीडिंग फर्दर ऑन, लेट्स टॉक अबाउट नाउ द एजुकेशन सेक्टर हियर. So it will obviously said it said सबसे पहला we will talk about education access to the girls here. We have talked about we are going to focus on STEM equity. STEM का मतलब क्या होता है? Science, technology, engineering and mathematics. अब इसके लिए कर क्या रहे हो? आपने बोला हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक हॉस्टल सेटअप करेंगे for increasing that thing. So that STEM, the access can be enhanced here. Then comes provision of specialized training here. So veterinary science, for veterinary science 20,000 loan linked subsidies for colleges are going to be provided so that veterinary science can be enhanced here. फिर आप फ्यूचर वर्कफोर्स के लिए क्या करोगे? आपने बोला हम लोग we are going to focus on preparation of 2 million creative economy professionals by 2030. So 2 million creative economy professionals are going to be set up by 2030. That is the next thing we have talked about here. In addition to that, when I talk about education sector here, it has talked about that we have to set up a university township center. So 5 university townships are going to be set up here, which is focusing on complete एक education ecosystem बनाने के लिए आप university township setup करोगे, ठीक है जी. और ये लिंक करेंगी एजुकेशन विद द इंडस्ट्री नीड्स. दैट्स द थिंग दे आर गोइंग टू सेट अप हियर. इसके साथ साथ आपने बोला वी आर गोइंग टू सेट अप अ सिटी इकोनॉमिक रीजन्स, ठीक है जी, where 5,000 crore rupees has been given for a city economic region which would be allocated in the upcoming 5 years here, ठीक है, जो क्या एक स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक जोन की बात कर रहा है. अब ये टाउनशिप्स बनोगे एजुकेशन में, सिटी इकोनॉमिक रीजन बनाओगे, ठीक है जी, फाइनेंशियल कंपटीशन क्रिएट करोगे इन्हीं के अंदर ताकि एक प्रॉपर आप सिटी स्ट्रक्चर बना सको. एंड देन व्हेन आई टॉक अबाउट द AVCG, एनिमेशन विजुअल ग्राफिक, एनिमेशन विजुअल,
जब हम ऑरेंज इकोनॉमी की बात करते हैं, एबीसीजी की बात करते हैं, ठीक है, एनिमेशन, विजुअलाइजेशन, ग्राफिक की जब हम बात करते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में टू थिंग्स हैव बीन इंट्रोड्यूस. First thing they have said is they're going to launch a new National Institute of Design is going to be set up, that is going to be set up in Eastern India. Along with that, 15,500 institutions are going to be set up for EVCG here, where 15,000 schools and 500 colleges, there these labs are going to be set up here, ठीक है जी, by IITC Mumbai. IITC Mumbai जो है वो यहाँ पे head up करेगा these specific labs on EVCG here. Okay. Then let's talk about another important thing in the same pillar, ठीक है जी. Then if I talk about here, 1 lakh diet professionals मैंने बता दिया, specialized health disciplines हैं, मल्टी स्किल के बाद क्विक रिवीजन करवा रहे हैं. 3 न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हैदराबाद, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, 5 रीजनल मेडिकल टूरिज्म हब्स बनेंगे और स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसर्च के ऊपर फोकस करेंगे. जस्ट अ क्विक रिवीजन फॉर द हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड नाउ. ओके. Then after that it has talked about the sports sector as well as the tourism sector here. ठीक है जी. अब टूरिज्म सेक्टर में क्या बात की उन्होंने बोला जी, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन 4 major astronomic facilities. So for promotion of astrophysics here, it has been proposed that there will be a 4 major astronomic facilities are going to be set up in India. Then a new ecotourism trials are going to be set up here, where guys they have talked about mountain, coastal, bird watching trials in the key ecological zones here. ठीक है जी. तो इसके बारे में यहां पे बात की गई है. अगर हम माउंटेन ट्रायल्स की बात करें तो यहां पे कौन से, यहां पे ना याद रखना, यहाँ पे 2 हैं क्या माउंटेन ट्रायल्स, एक है आपके बर्ड सेंचुरी ट्रायल्स. तो माउंटेन ट्रायल्स कहां पे, लेट्स ट्राई टू राइट डाउन दिस स्टेट्स नेम है, दैट इज हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड. देन वी हैव अराकू वैली, and the third one is Podigai. So please write down these points, they are important for your examination. तो 5 माउंटेन्स के लिए लॉन्च किए गए हैं. फिर बात करते हैं बर्ड वॉचिंग. तो बर्ड वॉचिंग के लिए कहां पे किए गए जी, दैट इज इन पुलिकट लेक, एंड देन वी हैव पुलिकट लेक, दैट्स इन ऑन द बॉर्डर ऑफ एपी एंड तमिलनाडु. फिर आ जाता है टर्टल ट्रेल्स. ठीक है, turtle trail is going to be set up here, that is in Daman and Diu. ठीक है, केरला है और कर्नाटका है. तो यहाँ पे आपके टर्टल लेक्स बनेंगे. ठीक है, तो ये बताया गया. इसके अलावा द नेक्स्ट थिंग दे हैव डिस्कस्ड इज वी आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स, दैट इज समथिंग दे हैव इंट्रोड्यूस्ड हियर. 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स आर गोइंग टू बी सेट अप हियर. अब नाउ गाइस दे हैव नॉट गिवन द डिटेल ऑफ ऑल द 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स, बट आपको पता है जैसे मेजर उन्होंने बोला लोथल है, ढोलावीरा है, ठीक है, सारनाथ है, दे आर गोइंग टू बी द साइट्स व्हिच आर गोइंग टू बी इंक्लूडेड हियर फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, टूरिज्म सेक्टर को एक्सपेंड कर रही है. अलॉन्ग विद दैट व्हेन आई टॉक अबाउट द सपोर्ट सेक्टर, सो स्पोर्ट्स में दे हैव सेड दैट दे आर गोइंग टू लॉन्च अ न्यू खेलो इंडिया मिशन स्कीम. ठीक है, a revamping of that is going to be done here, where the objective is obviously we are going to focus on talent and coaching pathways here, we are going to focus on infrastructure here, so that modern technologies, world class sports facilities could be set up in India also. Because as you all know guys, when we are going to bid for Olympics here, we have said that we are going to bid for Olympics here, we are announcing or we are going to organize the Commonwealth Games. तो हम चाहते हैं हमारा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी enhance करे. So that's what they have discussed in this specific segment here. तो second कर्तव्य is about fulfilling the aspiration. Then comes the third कर्तव्य, which is talking about now development for all, aligning the vision of सबका साथ सबका विकास. That comes in कर्तव्य number 3 here. So इसमें सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में. इसमें देखो एग्रीकल्चर सेक्टर, दिव्यांगजन, they were the prime focus here. When I talk about agriculture here, so prime सबसे पहले उन्होंने क्या बोला जी, हम लोग एक भारत विस्तार इनिशिएटिव स्टार्ट करें जो कि एआई बेस्ड इनिशिएटिव है. ठीक है, वी आर गोइंग टू सेट अप अ भारत विस्तार इनिशिएटिव. Now under the Vistar, let me just give you an idea what does Vistar stands for. You can be asked a question कि भारत विस्तार की फुल फॉर्म क्या है. हम बात कर लेते हैं विस्तार क्या आता है जी. It's an AI based platform which stands for virtually integrated system to
एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, दैट इज विस्तार। ठीक है, भारत विस्तार, अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, इट्स एन एआई बेस्ड इनिशिएटिव जहां पे आप एग्रीकल्चर स्टैक, एग्री स्टैक और आईकर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को यूज कर रहे हो। देन फॉर कैशू नट्स, ऑब्वियसली वी वांट टू सेट अप अ प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड हियर बाय द ईयर 2030 हियर। देन कोकोनट के बारे में डिस्कस किया गया था, कोकोनट प्रमोशन मिशन और कोकोनट प्रमोशन स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड वेयर दे हैव टॉक्ड अबाउट वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट्स। तो ये याद रखना है कि इंडिया क्या है जी, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोकोनट का, कोकोनट प्रमोशन स्कीम हमने लॉन्च की है। देन फॉर the self-help groups, a She-Mart initiative has been started, which is known as self-help entrepreneurs scheme. So self-help entrepreneurs She-Mart scheme has been launched for women entrepreneurs in the rural women. So that is where the finance minister, she has said or she has emphasized specifically कि हम लोग women from Lakpati Didi, that is from Lakpati Didi, now we are going towards the entrepreneurial system in the ecosystem of rural India, that is we are going to set up on She-Marts here. Then 500 Amrit Sarovars are going to be set up, ये फिशरीज में यही प्राइमरीली बात है कि 500 Amrit Sarovars are going to be set up for the development of a kind of reservoirs are going to be set up for fishery sector. Then guys, for sandalwood system they have talked about, we are going to restore this sandalwood ecosystem, that is something they have discussed here. ठीक है कि सैंडलवुड इकोसिस्टम को भी रिस्टोर करेंगे, उसकी बात की। फिर हमने बात की हमें क्वालिटी पे फोकस करना, सो वी वांट टू फोकस ऑन क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट इन एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर हियर। ओके, दैट इज समथिंग दे हैव डिस्कस्ड हियर। दैट वाज अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर। देन दे हैव टॉक्ड अबाउट दिव्यांगजन्स हियर, अबाउट दिव्यांगजन्स हियर। सो फॉर दिव्यांगजन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव सेड दैट दिव्यांगजन कौशल योजना, so दिव्यांगजन कौशल योजना which will focus on IT, hospitality and food and beverages are going to be set up here. We are going to focus on modernized assistive technologies, ठीक है, ताकि हम एक मॉडर्न सिस्टम, मॉडर्न सेल सिस्टम बना सके। We are going to focus on R&D and AI integration for the Divyangjans here. Mental health and trauma centers are going to be set up here, ठीक है जी, because it has talked about mental health as a very big problem. So mental health के बारे में बात की है। उसी कॉन्टेक्स्ट में क्या बोला गया है, the National Institute of Mental Health, so National Institute of Mental Health Studies, they are going to set up a हेल्थ इंस्टीट्यूट इन रांची एंड तेजपुर। सो नॉर्थ इंडिया में कोई मेंटल टेलीमेंटल सेंटर नहीं था, तो अब उसके लिए हमने मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट बनाया है, कहां पे, रांची एंड तेजपुर पे। देन दे हैव टॉक्ड अबाउट ट्रॉमा सेंटर, सो 50% ट्रॉमा केयर हैव इंक्रीज्ड, ठीक है, एक्सपेंडिंग द इमरजेंसी एंड ट्रॉमेटिक केयर कैपेसिटी अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट्स एंड हॉस्पिटल्स, दैट इज वेयर दे हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट थिंग इन टर्म्स ऑफ दिव्यांगजन्स एंड मेंटल हेल्थ हियर। ठीक है, Then guys, if I talk about, that's about the 3 कर्तव्यों here. इसके बारे में बात करते हैं फटाफट में fiscal consolidation के बाद में। When the budget was started, so first of all, the first thing that was presented was the 16th Finance Commission's report here. Now, during the 16th Finance Commission report, the major highlight was that guys, the vertical devolution has been done here. और जो recommended है, वो central tax for state has been retained at 41% here. Along with that, they have said that there is going to be a grant of 1.4 lakh crore rupees, which is going to be provided, which will include allocated, because that is going to be allocated for rural local bodies, disaster management for this year 26-27 here. And then they have said all the core recommendations which were given here were being approved or were being finalized by the government here. Then the important thing that was in context of fiscal deficit here, so we were discussing in the economic survey also that it has proposed कि fiscal deficit हमारा range में है, वही बजट में भी बोला गया है that fiscal deficit was around 4.4% and it is estimated to be around 4.3% for this financial year of 26-27 here. Then let's quickly talk about some important direct taxation reforms. Obviously previous year the basic thing that was discussed or the basic और जो बड़ा सबसे बड़ा पॉइंट था वो क्या था, वो यही था भाई कि हमारी जो टैक्सेशन है, हमारी इनकम टैक्स स्लैब बढ़ गई थी एकदम ही, दैट वाज एनहांस्ड टू 12 लाख रुपीस। दिस ईयर देयर इज नो चेंज इन इनकम टैक्सेशन स्लैब, बट देयर वर अगेन सम मेजर रिफॉर्म्स दैट वर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। वन ऑफ देम वाज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स रेट्स, ठीक है, हैव बीन स्लैश्ड डाउन फॉर द एजुकेशन सेक्टर अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, मेडिकल सेक्टर हियर, टूरिज्म पैकेजेस, दैट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट फॉरेन टूरिज्म पैकेजेस के लिए टीसीएस रेट जो है, इट हैज नाउ बीन रिड्यूस्ड टू 2% हियर। Then for motor accident claims, the TDS, it's not TDS, it's TCS. TCS is removed here now. तो TCS यहाँ पे खत्म ही कर दिया गया है। फिर जो हमारे TDS प्रोसेस है वो NRIs
जो सेलिंग प्रॉपर्टी है उनके लिए सिंपल किए गए, तो उसमें के लिए क्या किया हमने, पैन बेस्ड चालान सिस्टम स्टार्ट किया है, which is going to streamline or simplify the tax reduction at source for those NRIs who are selling their property. So again in taxation we have tried to simplify the reforms here. इसके बाद सेक्टोरल सेक्टर की मैं बात करूंगा, तो भाई मेजर बूस्ट जगह आईटी सेक्टर के, उन्होंने बोला जो भी आईटी सेक्टर रिलेटेड चीजें हैं हम एक आईटी सर्विस बनाएंगे, आपको जो टैक्सेशन है उसी के अंडर ही कैटेगराइज किया जाएगा, तो ये सबसे बड़ी चीज बनी है, ऑल आईटी सर्विसेज will now be taxed under a single category here. Then a very important thing, one-time foreign asset disclosure scheme has been introduced, where they have said that हम आपको 6 months की विंडो देंगे, ठीक है, और इम्यूनिटी भी दे रहे हैं प्रोसिक्यूशंस फॉर डिस्क्लोजिंग ओवरसीज एसेट्स, तो इट्स अ काइंड ऑफ डिस्क्लोजर, ताकि जो पैसा आपका है अब वापस कर दीजिए. फॉर कोऑपरेटिव्स रिडक्शन विल बी डन फॉर कैटल सप्लायर्स, ठीक है जी, और इंटर कोऑपरेटिव डिविडेंड इनकम भी जो है प्रपोज की गई है फॉर द cooperative sector here. So that was the important reforms introduced for the direct taxation here. Along with that, guys, the other thing that was discussed was obviously एक चीज और याद रखना, cloud service. So cloud service is one thing biggest. So those persons who are providing cloud services in India, for that there is a tax holiday that has been announced in the year 2047 तक tax holidays announce कर दी गई हैं. That's the biggest thing. और एक ही चीज है उसमें कि the resellers should be Indian, और तो ऑब्वियसली इट शुड बी इंडियंस की सिस्टम्स को, आप टेक्नोलॉजीज को आपको यहां पे यूज करना, दैट इज द थिंग हियर. देन इफ आई टॉक अबाउट फर्दर हियर, सो सेफ हार्बर थ्रेशोल्ड हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 300 करोड़ टू 2000 करोड़ रुपीस, ठीक है जी. कॉमन मार्जिन सेफ हार्बर्स में वो भी 15.5% कर दिया गया है, और टैक्स हॉलिडेज मैंने आपको बता ही दिया टिल 2047 आर गिवन हियर. देन मेडिकल टूरिज्म हब्स, इकोनॉमिक्स दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, एजुकेशन सेक्टर के लिए हाई पावर्ड एजुकेशन कमेटी भी यहाँ पे आपने बनाई है, विच विल फोकस ऑन कि जो नया रिक्वायरमेंट है एजुकेशन के लिए वो आपने कमेटी यहां पे बना दी है, ठीक है. देन कम्स द फाइनल पार्ट, वी टॉक अबाउट हाउ द गवर्नमेंट इज परफॉर्मिंग. सो देयर 3 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. पैसा कहां से आ रहा है, कैसा जा रहा है. तो सबसे पहले तो ये पैसा आ कहां से रहा है, फ्रॉम वेयर द गवर्नमेंट इज अर्निंग मनी हियर. सो हियर इफ आई टॉक अबाउट हियर, वन थिंग दैट्स इंपॉर्टेंट हियर इज, ठीक है जी, इफ दे आस्क यू द मेजर चंक ऑफ मनी इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम बोरोइंग्स एंड लायबिलिटीज, which is 24%, number one. After that, the second chunk of your major income is coming from now, that is income tax. So personal income tax and corporate tax together contribute around 39%, because 21 plus 18 बन जाता है. बट अगर आप बात करते हो यहाँ पे इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स की कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा बड़ी है, 21% है. देन कम्स जीएसटी, दैट्स एट पॉइंट नंबर 4, ठीक है. ओवरऑल इफ आई टॉक अबाउट, तो वैसे तो इनकम टैक्स अगर बात करोगे, पर्सनल इनकम टैक्स प्लस कॉर्पोरेट टैक्स, इट गिव्स द मैक्सिमम. देन आता है बोरोइंग, then आता है GST, and then if I talk about, we have a very less money that is from non-debt capital receipts here. Then let's talk about the where the money is actually going here, ठीक है. मनी जाता कहां से इंडिया सबसे ज्यादा, तो आप देखिए सबसे ज्यादा पैसा अगर इंडिया में हम बात करते हैं तो 22% स्टेट जो है वो स्टेट्स का शेयर आ जाता है, ठीक है. उसके बाद 20% हमारी इंटरेस्ट पेमेंट्स जाती हैं, फिर हमारे जो गवर्नमेंट रन स्कीम्स हैं 17% पैसा वहां पे जाता है, 11% in defense, that 8% in centrally sponsored schemes, 15% for subsidies, and 7% is given for finance commission and other related taxes here. And then when I conclude the session here, the final thing that needs to be discussed here is, guys, we have not discussed lot and lot about indirect taxes, because indirect taxes में काफी ज्यादा discussions हुई हैं. तो I think बहुत ज्यादा इतना जो when we come up with a detailed document in the course, obviously we are going to discuss about that thing. पर मुझे नहीं लग रहा कि इंडायरेक्ट टैक्सेशन में इतना ज्यादा टैक्सेशन के ऊपर क्वेश्चंस हमसे पूछे, तो मेजर चंक्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो डिस्कस दैट थिंग. और अगर हम यहाँ पे बात करें पैसा सबसे ज्यादा कहां पे दिया गया, तो ये याद रखना कौन सी मिनिस्ट्री को, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को. सो ट्रांसपोर्ट हैज बीन गिवन मैक्सिमम मनी, देन इट कम्स डिफेंस सेक्टर, देन कम्स रूरल डेवलपमेंट, एंड देन कम्स एजुकेशन. सो दीज आर द मेजर मिनिस्ट्रीज वेयर द मनी हैज बीन स्पेंट बाय द गवर्नमेंट हियर. So this is all about your budget detailed session. So I hope guys the session is fruitful for you. We have tried to bring up something new for you this year, ठीक है. So that's why we got a little bit late today. I'm not saying कि हम लोग बहुत टाइम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, ठीक है. बट क्योंकि हमें था कि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में बजट पढ़ाया जाए, ठीक है. लेट्स नॉट टेक इट इन अ मोनोटोनस वे. So for that purpose, we have been a little bit late here. So I really wish you all the best. I hope you have understood all the important points of the budget here. And tomorrow, guys, early in the morning, I will have a discussion with you on the most important points which you cannot skip for the budget. But I will advise you guys that both the sessions, the initial reaction session, the detailed session,
both are important for you, so please to watch these sessions, because both the sessions I have tried to cover all the important information जो भी initial मिला, we have tried to come up with the things here. So that's all from my side, guys. I really wish you all the best for the examination. Keep working hard, keep preparing hard. Still you have any doubt in your mind, do not worry, I'm always there for you. Just drop me an email at hello@edutap.co.in. ठीक है जी, चलिए guys. On that note, again, let's wish you all the best. I hope the day is good for you. आपने बजट एक बार देख लिया होगा. चलो जी.